Now the subject which we are going to do is psychiatry. Initially in this PDF, medicine is given. I'm starting from the psychiatry, then last we'll do the medicine, and then we'll talk about the surgery part. Chalo. Let's talk about the term psychiatry. Sir, the term psychiatry was given by Johann Christian Reil. And here, in psychiatry, there are different questions are asked, and those questions are mini mental state examination. So total 30 questions are asked. Different questionnaire is there and 30 questions are asked, out of which if score is less than 23, if the score is less than 23, the patient is diagnosed with dementia. Diagnosed with dementia. So, chalo, mini mental state examination, there are 30 questionnaires is there, less than 23 is considered a dementia. What do you mean by dementia? Memory loss plus judgment is impaired. On basis of this question, which will tell the recent memory, past memory, consciousness, then cognitiveness, all those type of questions are there. Now coming to the next one is called as what, sir? Your affect. Affect is that emotional state which can be observed. By looking at my face, if you can say I'm happy or sad, that is what called as affect. The different type of affect we are having. What different type of affect we are having? Number one is what's called as euphoria, elation, exultation. Euphoria is excessive happiness beyond the point of relevance. Affect is that state which can be seen, observed. So in that, number one is euphoria, excessive happiness beyond the point of relevance. The person is over happy. If I should be just happy and I am laughing, ha 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 ha, this is euphoric feeling. Elation. Euphoria plus increase in psychomotor activity. I am hyperactive also along with the happiness. Exultation. Sir, euphoria, increase in psychomotor activity, delusion of grandiosity. What do you mean by delusion of grandiosity? A person feels some kind of special power, role or identity. Some kind of special role, power or identity, and this is most commonly seen with the male, more common than the female. Then coming to the next one is thought. Thought is cognition. For example, how you will check my cognition? I'll say I am Dr. Paras, I am teacher, I am doctor, I am surgeon. You will say yes sir is saying right. If I will say I'm Dr. Paras, sometime lawyer, sometime I'm taxi driver, sometime I'm astronaut, sometime I am doctor, sometime I am plumber. So these kind of things will make no sense. That means my cognition is not working fine. And on the basis of this information, you will come to know कि मेरा दिमाग सही है कि नहीं. So thought is cognition. What are the disorder related to the thought? Let's learn them one by one. सबसे पहला वाला is derailment. Derailment, my different derailment. Now derailment is connection between two thoughts are lost. For example, my name is Paras, Delhi is capital of India. So there should be a addition to this. My name is Paras, I live in Delhi and Delhi is capital of India, looks more sensible. My name is Paras, Delhi is capital of India, I am doctor, India is great country. So there is a derailment. Then loosening of association. Connection between two components of the same thought is not matching. I am Paras, I'll work hard, it is going to be the blockbuster of the year. This is component which is matching. If I say I am Paras, I am going to be blockbuster. So there is a component which is not matching of a same thought. Okay, I am Paras, I'll go to Goa. I'll say I am Paras, I'll take flight, I'll go to Goa. So this makes some sense. And if I'll miss the entire part between this, that means some component is missing. Some component is missing. Then what is derailment is done. This loosening of association is done. Incoherence. Thought disorder next is incoherence. What do you mean by incoherence? Sir, word salad. Word salad. Many things we are mixing together. Tea, Paras, going, eating, flying, sleeping, phone call doing, studying. So all these things I am making a jumble. This is called as incoherence. This is called as incoherence. Okay. Tangentiality, circumstantiality and neologism. Sir, what is this? Sir, one by one. Yes. Tangentiality is extra detail that never reaches the goal. Extra detail that never reaches the goal is called as tangentiality. Circumstantiality is extra detail that reaches the goal. If I am asking someone, are you committed or not? And that person is making story, but not telling that I'm committed or not. This is some kind of example of a tangentiality. And if another person who is having circumstantiality, I'm asking, are you committed?
So this is doing jalebi talk, and then in the end, taking so much of time, they'll come to know. They'll tell us that yes, I'm committed or not. So taking time, है ना, taking time and then telling is circumstantiality. Never telling is tangentiality. Is a tangentiality. Then neologism, deriving new word without any meaning. Okay, like suppose I am in bottle, I will say bottlosa. There is no word like bottlosa. Bottletting, no word like that exists. I just made it by my own choice. Now I'll ask some question regarding the thought disorder, and you'll tell me which thought disorder I am talking about. Sir, my question number one is, sir, extra detail that never reaches the goal is called as tangentiality. Sir, new word without meaning is called as neologism. Sir, component of the thought is not matching, that is called as loosening of association. Now sir, content of thought, you will see right here, sir, delusion. I'll simply tell you what delusion is, what superstition is. If any belief is supported by society, this is called as superstition. And if any belief not supported by society is called as delusion. मैं बोलूँगा कि आज मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा, कल बारिश होगी, सोसाइटी करेगी हाँ। मैं कहूँगा कल मैं बारिश कराऊंगा, सोसाइटी कहेगी ना, तेरा दिमाग खराब हो गया, डिल्यूजन हो गया तेरे को, ठीक है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. बिल्ली रास्ता काट जाती है, अपशगुन होता है, सोसाइटी बोलती है यस दिस इज डिल्यूशन. मेरी गाड़ी रास्ता काट जाएगी तो अपशगुन होगा, that will become delusion. If society, so not supported by socio-cultural norm will become delusion, supported by socio-cultural norm will become superstition. Perception, hallucination. There can be auditory, visual hallucination, reflex hallucination, all those kind of. Illusion is a misinterpretation of a stimulus. रस्सी को सांप समझना, फिर अंधेरे को परछाई समझना, ये सब चीजें आ जाती है illusion में. Now one by one let's talk about the delusion and delusion disorders. As I told you, delusion is something which is not supported by the society. Anything you are believing and society is not at all believing that. That is a false, firm, unshakable belief, sir. False, firm, unshakable belief which is not supported by socio-cultural norm. Sir, not supported by socio-cultural norm. Next is types of delusion. My difference type of delusion, number one is delusion of persecution. A person feels someone want to harm me. कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पैसे खाना चाहता है, कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है. But when you will see, there is no one like that. That means society is not accepting your claims. So this will become delusion of persecution. Sir, next delusion is delusion of reference. A person will say that everything happening around is related to me. उसका ये काम हुआ मेरी वजह से, उसकी गाड़ी ठीक हो गई मेरी वजह से, आज उसके घर में पानी आ गया मेरी वजह से, वो पास हो गया मेरी वजह से, वो रुक गया मेरी वजह से, नए कपड़े आए मेरी वजह से. हर चीज़ में अपना रेफरेंस देना इज डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस. अरे मुझे तो पता है, अरे मैंने ही तो कराया, अरे मैं तो था वहाँ, अरे अपने थ्रू. दीज ऑल थिंग आर डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस. Now delusion of grandeur or grandiosity, already we talked about that patient feel that he or she is having some kind of special role, identity or power. This is most commonly seen with the male. Now delusion of love or erotomania. Sir, in this person is feeling overloved. ऐसा लगता है दुनिया संसार मुझे प्यार कर रहा है, इतना अच्छा लगता है. Now you will tell me this is most commonly seen in the male or female. Sir, फीमेल मोर कॉमन देन मेल. ऐसा मैं नहीं बेटा, ऐसा मेरे साथियों, ऐसा संसार भी कह रहा है और ऐसी किताब भी कह रही कि फीमेल को लगता है कि सारे मेल उनसे प्यार करते हैं. बट इन रियलिटी एवरी मेल लव्स एवरी फीमेल. परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है कि नहीं. सो रिमेंबर डिल्यूशन ऑफ लव और एरोटोमेनिया है ना, ओवर लविंग मेल फीमेल, ठीक है. निलहिस्टिक डिल्यूशन. सर निलहिस्टिक डिल्यूशन और कोटार्ड सिंड्रोम. पर्सन फील द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड. सर दुनिया खत्म होने वाली है तो मैं क्लास क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं पास करूँ एग्जाम को, अरे सब तो खत्म होने वाला, अरे क्या ही करना ये करके, अरे क्या ही होगा यार, क्यों ही करना, क्या ही जीना.
तो ये सारी बातें अगर कोई करने लगे, दिस इज कॉल्ड एज निलहिस्टिक डिल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सर? निलहिस्टिक डिल्यूशन. निलहिस्टिक डिल्यूशन. देन कमिंग टू delusion of infidelity or Othello syndrome. Sir, morbid jealousy towards the loved one, most commonly seen with the alcoholic patient. डेली अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो आपके अंदर ये डेवलप होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं. Then coming to the favorite delusion of double of examiners, Capgras, refuse to identify known person. Dr. Paras is teaching you and you are saying, no, he was not Dr. Paras, he was someone else. Then this is called as Capgras, associated with Lewy body dementia. Sir, Frigoli. Now Dr. Paras is not there, and in the every lecture you are saying, oh, this is Dr. Paras. This is, when I was not there and you are saying I am there, this becomes Frigoli. When I am really there and you are refusing to identify, this is called as Capgras. This is called as Capgras. I'll ask different type of delusion. You will answer me, sir. If person feels world is about to end, this is called as nihilistic delusion. Nihilistic delusion. Sir, morbid jealousy towards the loved one. Othello syndrome. Othello syndrome. Very good. Sir, everyone loves me. Everyone loves me. Delusion of love or erotomania. Person want to harm me. A person want to harm me. कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है. This is going to be, sir, persecution. Beautiful answers. Beautiful. Now coming to the delusion part is done. Now coming to the superstition part. Superstition part, sir. Sir, false, firm, unshakable belief, sir. Sir, क्या sir? False, firm, unshakable belief supported by socio-cultural norm. For example, मैं हवन करूंगा तो पास हो जाऊंगा. हाँ बेटा करो. मैं जल चढ़ाऊंगा मैं पास हो जाऊंगा. हाँ बेटा. बिल्ली रास्ता काट गई. हाँ बेटा. लड्डू खाओगे अगर बाबा जी का प्रसाद तो कृपा होगी. बोलो हाँ बेटा खाओ. तो दिस इज व्हाट सर कॉल्ड एज सुपरस्टिशन. दिस इज कॉल्ड एज सुपरस्टिशन. ठीक है. चलो नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट द परसेप्शन. In perception disorder, you are having illusion and hallucination. Illusion is misinterpretation of the stimulus, where you will see. तुम्हारे सामने ऐसे रस्सी लटक रही. तो रस्सी 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 नहीं, तुम बोलोगे सांप सांप सांप. जब वहां जाकर देखा तो रस्सी लटक रही थी. भूत भूत भूत. वहां जाकर देखा तो शैडो थी. तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस. मुझे ऐसा लग रहा है पीछे कोई खड़ा है. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई चल रहा है. कोई मुझे लगता है जब मैं रात को सोता हूं तो मेरे बगल में आके कोई सो जाता है. These all are what are your illusions. Then coming to the hallucination. Auditory. आवाजें आ रही हैं. मुझे कोई बुला रहा है. That is what are your illusion. ठीक है. Then visual. No stimulus but 3D live clear is there. Image is there. No control. No will. And but I know, like in the MBBS Munna Bhai. In the MBBS Munna Bhai, there was Gandhi ji coming on its own, going on its own, able to talk, not able to stop, knows he's not there, still able to talk. These all things coming under the visual hallucination. Now the other type of hallucinations are also there. That is coming under tactile hallucination. Cockroach on the body. This tactile is associated with the MCQ called as, which toxicity we are talking about? Cocaine toxicity. Otoscopy, visualizing oneself without the mirror. बिना शीशे के खुद को देख पा रहे हो. नेगेटिव ऑटोस्कोपी. नो इमेज इन द मिरर. खुद की इमेज ही नहीं बन रही मिरर में. रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन एसोसिएटेड विद LSD. फॉर एग्जांपल LSD कंज्यूम करने के बाद किसी को लाल रंग दिखा दो तो उसकी दुनिया पूरी ऐसे ट्यूं 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 घूमने लग जाती है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन. रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्स अ डिलीरियम. डिलीरियम इज नथिंग बट कंफ्यूजन. Delirium is nothing but confusion. ढीला हो गया दिमाग. The patient is not oriented to time, place, person. This is reversible condition. If not reversible, go with the low dose antipsychotic. Now most common psychotic illness after the medical surgery is delirium. थोड़ी देर के लिए आदमी confused रहता है. And अगर stroke हो जाए तो depression is going to be there. So, now coming two terms, that is psychosis and neurosis. What is psychosis? What is neurosis? Let's talk about this. Psycho person is there, that means brain is absent, and if brain is absent, no insight, no contact with the reality. Neurosis means some neurons, some brain is present. So insight is present, contact with the reality is present. ठीक है.
And now HD symptom, those are hallucination and delusion. They are present in psychosis where insight and contact reality is not there. There you will have a hallucination also, you will have a delusion also. And in the neurosis, they are going to be absent. They are going to be absent. Now extrapyramidal symptoms occur after taking the antipsychotic drug. Extrapyramidal side effects are there of a antipsychotic drug, sir. Right from the initial phase they can happen on the duration basis. Duration कितनी है उसके बेस पे क्या हो सकता है? Sir, acute dystonia is the earliest thing to happen within 1 to 5 days. In this uncontrolled muscle spasm, mostly the face, tongue, etc. Sir, we can give benztropine, sorry, in both of them if eye is involved. अगर आंखें ऊपर रोल हो गई होगी, then we use a IM promethazine. Then we give a IM promethazine. Sir, Parkinsonism. Which Parkinsonism, sir? Drug-induced Parkinsonism occur within 1 to 4 weeks. एक महीने के अंदर after the drug initiation. Parkinson-like feature, rigidity, bradycardia, tremor, this will be seen. So acute dystonia, muscle spasms are there. Benztropine you can give. If eye is rolling upside, then you can give IM promethazine. Sir, akathisia occur between 5 to 60 days, तो कम से कम 2 महीने तक हो सकता है. रेस्टलेसनेस, इरेजिस्टिबल डिजायर टू मूव अराउंड, बार बार उठता है आदमी, एक जगह बैठ नहीं पाता. बीटा ब्लॉकर, बेंजोडाइज़ेपिन यू कैन गिव. न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, वीक्स टू मंथ इट टेक्स. मसल रिजिडिटी, अनस्टेबल बीपी, फीवर, मायोग्लोबिनीमिया. सर, डेंट्रोलिन सोडियम मैलिग्नेंट सिंड्रोम. Dantrolene sodium is a drug of choice. Late is tardive dyskinesia, uncontrolled movement like this, ऐसे ऐसे होने लग जाता है. Sir, this is involuntary movement and VMAT inhibitor like venlafaxine we will give right here. So acute dystonia से लेके we can have a tardive dyskinesia. These are the extrapyramidal side effects. These are what, sir? Extrapyramidal side effects. Done. Now schizophrenia, a very big topic and 100% asked topic in the exam is schizophrenia. My dear friends, schizophrenia, if we talk about, Eugen Buehler has given the terms schizophrenia. He has given 4 A's. Autism, autistic personality having no contact with the reality, and we having a mental retardation also. Ambivalence, slow action is there, slow growth is there, milestone, everything is delayed. Ambivalence, the person who is stuck between yes or no. Affective disturbance, there will be a flat mood. And sir, association loosening, there will be no contact with the reality. So these are the 4 features given by Eugen Buehler. Then coming to the next, positive symptom and the negative symptom. Very important to remember. Positive symptom are the HD symptom, my dear friends. What are the HD symptom we are having? Hallucination and delusion. Hallucination and delusion. And negative symptom we are having 4 A's. What are the 4 A's we are having? Alogia, nahi bol raha. A social, socially cut off हो गया. Anhedonia, the previously pleasurable activities are no more pleasurable. अब pleasure ही नहीं आ रहा उनमें, मजा ही नहीं आ रहा. Apathy, no emotional feelings for anyone, sir. This is called as 4 A's which are negative symptom. Alogia, asocial, anhedonia and apathy. Anhedonia and apathy. Sir, first rank symptom ICD-10 के accordingly. There are the 3 thought, hallucination and sir 3 made phenomena. Remember, 3 thought phenomena are thought broadcast. That means person will say, मैं जो सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब, that is going out. Then thought withdrawal. सर, जो मैं सोच रहा हूँ कोई इसको लेके जा रहा है. अगर कोई सुन पा रहा, that is broadcast. लेके जा रहा है withdrawal. और मैं नहीं सोचना चाह रहा डॉक्टर साहब, फिर भी मुझे सुनाई दे रहा, that is called as insertion. फिर भी मैं सोच रहा हूँ वो सब चीजें. Auditory hallucination, sir. Here the thoughts are audible. दूसरा क्या सोच रहा है सर, अब मुझे वो सुनाई दे रहा है. सर, वॉइस कमेंटिंग ऑन अ पेशेंट, मेरे को कोई आवाजें लगा रहा है. सर, 2 लोग बात कर रहे हैं, मेरे को वो सुनाई दे रही है. सर, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं दूर, मुझे वो बातें सुनाई दे रही है. सर, दिस इज ऑल कॉल्ड एज ऑडिटरी हैलुसिनेशन. एक में उसको लगेगा कि दूसरों की बातें सुनाई दे रही है, एक में उसको आवाज दे रहे हैं, इसमें 2 लोगों की बातें सुनाई दे रही है. मेड फिनोमिना, मैंने नहीं किया, मुझसे कोई करा रहा है. तो क्या करा रहा है? सबसे पहले वॉयलेशन. आदमी सो रहा था, बाहर निकला, डंडा लिया, मार दिया. तो पूछा क्यों मारा? तो बोला मैंने नहीं मारा, किसी ने मुझसे मरवाया है. इम्पल्स, उठा, डंडा लिया, कूदा, दौड़ा, बाहर मार दिया, मुझसे किसी ने मारा. अफेक्ट, अब मैयत में जाके हंस रहे हैं, किसने बोला क्यों हंस रहे हो? तो बोले मैं नहीं हंस रहा, मुझे कोई
हंसा रहा है. So these are the three made phenomena, three auditory phenomena and three thought phenomena, my dear friends. How to remember? BV, BWI, BWI, BV. That means BV सोचने पे मजबूर करती है. So these are thought phenomena. ठीक है सर. बाकी इसके अंदर आएगा VIA. Made phenomena is VIA. ठीक है. Now somatic specificity. The person will feel that he is externally controlled. मेरा मुझ पे बस नहीं है, मुझे कोई बाहर से मुझे बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है. मेरा दिल चुरा के कोई ले गया है और उस दिल के साथ कोई खेल रहा है. मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं उलझ रहा हूँ. Then coming to catatonic, also delusional perception also coming under this. Then catatonic symptoms, increase in excitement, stupor can happen. या तो बहुत excited होगा या बिल्कुल चुप होगा. Echolalia, mimic the examiner's voice is echolalia. Mimicking the examiner's action is echopraxia. Plus posturing will be there, catalepsy. L आ रहा है, L मतलब लकड़ी जैसी, लकड़ी जैसा posture मतलब hard posture, wax type posture will be there. And if loosening of muscle tone is there, that is associated with narcolepsy, that is cataplexy. नीचे पड़ गया, P for पड़ गया नीचे. कैसे पड़ गया? मसल टोन चली गई. दिस इज सीन इन नार्कोलेप्सी. ठीक है. डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे साहब? सर डायग्नोसिस में HD सिम्टम, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. सर नेगेटिव सिम्टम 4A's, एलोगिया, सोशल एनेडोनिया, एपैथी एंड कैटाटोनिक सिम्टम जस्ट लाइक स्टूपोर, एक्साइटमेंट, इकोलेलिया, प्रेक्सिया, समथिंग कैन बी देयर. Out of these symptoms, according to ICD-11, if 2 or more than 2 symptoms are present for equal to or more than 1 month, we consider that as schizophrenia. The DSM-5 कहता है 2 or more than 2 symptoms for equal to or more than 6 month, we consider that as schizophrenia. Now, sir, type of schizophrenia. ठीक है? Type of schizophrenia. Sir, paranoid, catatonic, simple and hebephrenic. My dear friends, we see right here. Paranoid schizophrenia is a most common schizophrenia. पैरों से हम most commonly चलते हैं. It is what, sir? Paranoid schizophrenia. Catatonic, sir, simple schizophrenia. Sir, simple schizophrenia is having the worst prognosis. अगर simple लोग फुटते हैं तो there will be a worse prognosis. ठीक है सर. Hebephrenic schizophrenia is bad habits are there. Hebephrenic is bad. Now, drugs we give in a schizophrenia, typical and atypical antipsychotics, sir. Typical and atypical, you will see the typical one, they act on the typical D2 receptor. And atypical will act on D2 as well as serotonin receptors. ठीक है? Now, what are the drugs you have to remember? कहते हैं haloperidol, chaloperidol, flufenazine. That is haloperidol, chlorpromazine and flufenazine. Atypical is colola, olanzapine, aripiprazole, risperidone and ziprasidone. All of the antipsychotic is having a common side effect, that is dry mouth. One clozapine is having exception, which is increase in secretion. ठीक है? चलो. Now sir, depression की बात करते हैं. Major symptoms of depression. So schizophrenia is clear to all of you. Positive symptom, negative symptom, formal thought disorder, catatonic symptom, ICD-10, DSM-5 के accordingly we have diagnosed it. Types of schizophrenia, then treatment we have decided of a schizophrenia. Now sir, coming to the depression part, sir. Depression में major and the minor symptoms are there. Major symptom में what we are having, sir? EMI. E stands for loss of energy, low mood and lack of interest, sir. Yes, sir. E stands for loss of energy, low mood and lack of, plus there will be a omega sign. There will be what, sir? Omega sign. Minor and major, minor sign में क्या आ जाएगा? या तो बहुत ज़्यादा सोएगा या बहुत कम सोएगा इंसान, या बहुत खाएगा या कम खाएगा, दिमाग काम नहीं करे, कंसंट्रेशन कम होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे. Sir, according to ICD-10, 2 major and 2 minor symptoms, if they are present for at least more than 14 days, we call this as depression. Sir, DSM-5 says any 5, that is major, minor, any 5 symptoms are there, then this is what's your depression, 14 days. Treatment is pharmacological and psychological. Psychological is CBT. There is one called as CBT, another called as BT. If counseling के साथ साथ में
money is given, or you can say reward is given, then it is called as behavior therapy. Only counseling is CBT. CBT is better than the pharmacological therapy. So CBT is having more impact. Then if it is not getting resolved, you can add then pharmacological therapy. In that you will add SSRI, and best SSRI we are having fluoxetine. Then one cognitive theory of depression is what given by Aaron Beck, sir. Hopeless, helpless, worthless. Hopeless, helpless and worthless, sir. Sir, what is happening right here in the mania? Hypomania and mania. साइकोमेट्रिक एक्टिविटी बढ़ गई, मूड हर टाइम है, सो कम रहा, बातें ज़्यादा कर रहा, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, खुश रहता है, चिल्लाने लग जाता है, अनस्टेबल मूड है. सिम्टम फॉर 7 days आर कंसिडर एज मैनिक एपिसोड, अप टू 4 days वी कॉल दिस एज हाइपोमेनिया. ट्रीटमेंट में एटिपिकल, टिपिकल, एंटीसाइकोटिक्स. बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इफ यू टॉक अबाउट सर, BPAD1 and BPAD2. Sir, BPAD1 is MD, that is mania and depression. Treatment is valproate. BPAD2 is HD, sir, hypomania and depression. Hypomania and depression. And overall bipolar disorder, what is the drug of choice for overall bipolar disorder? Sir, lithium. Yes, lithium. Now, let's talk about GAD. GAD stands for Generalized Anxiety Disorder, जो हमें होती है नॉर्मली एग्जाम से पहले, कोई भी कंपटीशन, शादी से पहले, ठीक है. चलो, फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी. W फॉर वरी, W फॉर वरी, A फॉर एंग्जाइटी, T फॉर इंक्रीज इन मसल टेंशन. जब हम चिंतित होते हैं हमें डर लगता है, मसल टेंशन बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है. अगर हम डरेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसलिए डरना मना है. हाइपर अरोज, इरिटेटेड हो जाएंगे. ट्रीटमेंट में क्या करोगे? CBT प्लस SSRI, ठीक है. पैनिक अटैक, सडन सीवियर स्पॉन्टेनियस अटैक ऑफ एंजाइटी. इम्पेंडिंग डूम लाइक फीलिंग, पर्सन विल फील कि मरने वाला हूँ, दुनिया खत्म होने वाली है. सर, इन दिस ट्रीटमेंट इज CBT प्लस SSRI. CBT is a treatment of choice for all anxiety except phobia, in which we give a behavior therapy. अगर किसी चीज़ से किसी को डर लगता है, उस केस में आप क्या दोगे सर? बिहेवियर थेरेपी. बिहेवियर थेरेपी. इन परफॉर्मेंस एंग्जाइटी वी गिव अ प्रोपेनोलोल. अगर जैसे कभी एग्जाम सेंटर जाने के बाद पाल्पिटेशंस हो रही है, देन वी यूज अ बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेनोलोल. प्रोपेनोलोल, ओके. Otherwise, behavior therapy, and if it is chronic panic attack, CBT plus SSRI is a treatment. Now let's talk about the different type of phobias, my dear friends. Sir, number one type of phobia we have to talk about is nyctophobia, fear of dark, and for night. And night is dark, fear of dark. Okay? Acrophobia, acro lies at height, fear of height. Cynophobia, C for canine, canine taste कुत्ते के होते हैं, fear of dogs. Alluro cats, alluro cats. Sir, alluro cats हो गया. Mysophobia is a fear of dirt and germ. Xenophobia X is a fear of stranger. Thanato is for death. Agora is for open space. Agora साधु क्या है? Open space में नहीं जाते. Open space में नहीं जाते हैं, डर लगता है open spaces से. Claustrophobia, fear of closed space, and pyrophobia is a fear of fire. And in the phobias, the treatment is behavior therapy. Which type of behavior therapy? Desensitization. जैसे अंधेरे से डर लगता था तो अंधेरे में लेके गए, फिर इनाम दिया, ठीक है. जैसे अगर खुली जगहों से डर लगता है तो खुली जगह में लेके गए, फिर इनाम दिया. बंद कमरों में जाने से डर लगता था, वहां लेके गए, फिर इनाम दिया. तो लेके गए, इनाम दिया, लेके गए, इनाम दिया. दिस इज कॉल्ड एज डिसेंसिटाइजेशन. फिर किसी को आग से डर लगता है तो धीरे धीरे आग में लेके गए, फिर उसको इनाम दिया. फिर किसी को हाइट से लगता था, कुत्ते से लगता था, कुत्ते के पास लेके गए, फिर इनाम दिया. तो दिस काउंसलिंग प्लस इनाम प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ठीक है, पारसबोपिया. ठीक है, चलो. नाउ कमिंग टू द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. रिमेंबर, दिस इज ईगो डिस्टोनिक, नॉट एग्री टू सेल्फ. हाथ साफ है फिर भी अपनी बात नहीं मान रहा. दिस इज बिहेवियर थेरेपी प्लस SSRI. एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, कोई मान नहीं रहा तो उसके हाथों में क्या करना है? हैंडकफ्स लगा देने, अगर हो पड़े हुए आपके पास तो. वरना नहीं हो, किसी के पास शौक कोई नहीं रखता हो हैंडकफ्स का, तो दे पीपल कैन यूज अ रोप. ठीक है, दे पीपल कैन यूज अ रोप, और कुत्ते की चेन भी यूज कर सकते हैं उसको हाथ बांधने के लिए. ठीक है, चलो सर. सो दिस इज, अगर कुछ नहीं मिले तो नाड़ा तो होगा, उसको यूज कर लेना. ठीक है, सो दिस इज व्हाट सर योर ऑब्सेसिव कंपल्सन. ठीक है, ठीक है, चलो. Now hypochondriasis, where the patient visit multiple doctors to confirm the diagnosis. ठीक है. PTSD, कोई इंसिडेंट हुआ, कार ब्लास्ट, जिसमें कोई हादसा हो गया,
अब इसके बाद क्या हुआ, इकलौता इंसान बच गया वहाँ से। वो इंसान बचने के बाद क्या हुआ, उसको बार बार वो चीज़ें याद आती थी। 1 महीने तक आएगा तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर 30 दिन से ज़्यादा आएगा देन इट इज़ कंसिडर्ड एज PTSD। ट्रीटमेंट इज अगेन CBT प्लस SSRI। Dissociative amnesia and fugue. Amnesia is complete loss of the memory of the traumatic incident. Fugue is some person was there, some incident happened and person disappeared. And after 6 months or 1 year, you found that person back and he is making assumptions. मैं कहाँ था, कहाँ गया, क्या किया. Is not able to tell exactly what he did for that period of time when he was lost, my dear friends. And this is called as dissociative fugue. Adjustment disorder. Most of the FMG friends who went abroad, they had an adjustment disorder. So DIL, दिल, दिल याद रखना. D for decreased sleep, irritability, low mood. जिनका ज़्यादा रहता है 3 महीने तक, usually resolved by 6 months. If not, then behavior therapy need to be given. जैसे मैं पढ़ने गया लखनऊ, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मेरे पापा ने मुझे क्या करा, थोड़ा सा काउंसलिंग करी और मुझे एक सैमसंग का टैब गिफ्ट करा, तो मेरा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ठीक हो गया. ठीक है, ऐसे ही जो है एक हर किसी को जो है कुछ ना कुछ इनाम मिलता है तो ठीक हो जाता है. ठीक है, चलो अल्कोहल की बात करते हैं दोस्तों. लेट्स टॉक अबाउट दिस अल्कोहल पार्ट. सर 30 mg पर DL इज अ लीगल लिमिट. 200 से 300 में स्लर स्पीच, 300 के ऊपर पेशेंट माइट कैन डाई or might can go into coma. Now this is something which is important I want to talk about, and this is alcohol withdrawal symptoms. Sir, 6 to 8 hours बाद में क्या होता है, there is going to be the tremors, anxiety, nausea, vomiting. Yes. So after 12 to 24 hours, alcoholic hallucination. Then after 24 to 48 hour, alcohol withdrawal seizures. There is going to be alcohol withdrawal seizure. Alcohol withdrawal symptom. And 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, 48 hours are 2 days, 72 hours are 3 days. 2 से 3 दिन बाद होता है delirium tremens. D for delirium, T for tremors. D for delirium, T for tremors. ठीक है, 6 to 8 is tremors, anxiety, nausea, vomiting. Then 12 to 24 hour is alcoholic hallucination. Then 12 to 48 hours is alcoholic withdrawal seizures. And 48 to 72 hours, there is going to be the delirium tremor. These are withdrawal symptoms according to the duration. You should remember for your exam. You should remember for your exam. Now let's talk about the next topic called as eating disorders. Eating disorders. My dear friends, eating disorder number 1 is anorexia nervosa. Patient is not eating. Bulimia. Patient is eating but throwing out. Binge eating, eating and eating, not throwing outside. So this is all are the problem. We need a cognitive behavior therapy. Need to give a counseling, sir. Counseling, sir. Impulse, irresistible desire to do something. मजा आता है इसलिए कर रहे हैं, पता है गलत है, still we do it because मजा आता है. So in this number 1 is kleptomania. चुराने में मजा आता है चीजें. अच्छे घर का बेटा बेटी है, किसी को पेंसिल चुराने में मजा आता है, किसी को बैग चुराने में, चप्पल चुराने में मजा आता है, किसी को किसी कपड़े चुराने में मजा आता है. This is called as kleptomania. This is called as kleptomania. ठीक है. Then dipsomania, periodic drinking. Dipsomania is what, sir? Periodic drinking. Trichotillomania, pulling the hairs. Mainly females, जब एकदम मजा आता है इनको, क्या गुस्से में होती है, बाल खींचती है अपनी, फिर बालों को खा जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्राइकोबेजोर. क्या होता है, ट्राइकोबेजोर. ठीक है. नाउ सर मल्टीलोमिलिया, इनको जानवरों को परेशान करने में मजा आता है, पता है गलत है, फिर भी करते हैं क्योंकि मजा आता है, क्योंकि मजा आता है. ठीक है. चलो, the child psychiatry is the next topic, sir. ADHD, sir. Attention deficit hyperactive disorder. Sir, what is this ADHD? Boys के अंदर most commonly, boys are easy to distract. अगर कोई भी फेक आईडी बना करके अपनी और आपके चैट बॉक्स में आकर के आपको उल्टा सीधा बोलेगा, तो boys are the people who will distract easily, है ना. And girls are very clever. They will not get distract easily because for girls 1000 options are there, and for boys in 1000 one time option comes. So boy think after 6 month exam will recome, but this fake or real, it will never come again. So boy give preference to the fake IDs and girls never. Girls knows कि आज पास होने से पहले 1000 ऑप्शन है और पास होने के बाद 1 लाख हो जाएंगे. But boys give preference to आज है कल नहीं. ठीक है. This is a harsh reality. So ADHD is attention deficit hyperactive disorder. Sir,
एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर 50% 50% जो है प्यूबर्टी तक रिजॉल्व हो जाता है. एंड ड्रग ऑफ चॉइसेस मिथाइलफेनिडेट इफ नॉट गेटिंग रिजॉल्व. कंडक्ट डिसऑर्डर, बच्चा बदतमीज है, स्कूल से निकाला जा चुका, कोई बिहेवियर नहीं है, स्कूल के टीचरों के प्रति कोई इज्जत नहीं है, जानवरों को परेशान करता है. इन सच बच्चा यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट कॉल द पेरेंट्स and tell them everything. The parents will take the bacha home and done. This is parent management training. This is what, sir? Parent management training we do in this, sir. Sleep analysis or bed wetting. Sir, bowel control, bladder control, when they are coming, sir, bowel control is coming at 4 years and bladder is coming at 5 years. Chalo. Then, sir, behavior therapy and bladder training. This is what we do, sir. सर बिहेवियर थेरेपी, बेल एंड पैड मेथड. बेल एंड पैड मेथड क्या होता है? जैसे सुसु आता है, गीला होता है, वैसे ही अलार्म बजने लग जाता है. जैसे ही बेड पे सुसु किया ऐसे ठीक है. ब्लैडर ट्रेनिंग, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक इन द इवनिंग में फ्लूइड, वरना ट्रीटमेंट में आप ड्रग्स यूज कर सकते हो. फर्स्ट लाइन डेस्मोप्रेसिन, डिक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन. सेकेंड लाइन इमाप्रिन, इंक्रीज एरोजल, मतलब इरिटेबिलिटी बढ़ा देता है, स्फिंक्टर की टोन बढ़ा देता है. तो डेस्मोप्रेसिन यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर देगा और अपना इमिप्रिन जो है वो हाइपर एरोज कर देगा ताकि आपको पता लग जाए. ठीक है, चलो डन. नाउ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज ऑफ 3 टाइप. व्हाट 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज? क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी. सर क्लस्टर ए, बी एंड सी. सर ए इज पैरानॉइड, एस फॉर सिजॉइड एंड एस फॉर साइज. पैरानॉइड इज अ सस्पिशियस पर्सनैलिटी. Suspicious personality. Sir, schizoid is away from social life and schizotypal is stranger or odd behavior. Sir. Sir, histrionic is attention seeker. Who is attention seeker, male or female? Sir, attention seekers are the female. Female are the attention seekers. ठीक है. Antisocial, no respect for law. नार्सिसिस्टिक इज ग्रैंडियोस और सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, अगेन मेल में होते हैं. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी इज अनस्टेबल बिहेवियर. ठीक है. चलो नाउ क्लस्टर सी इज डिपेंडेंट, अवॉइडेड एंड ओसीडी. ठीक है. नाउ सर रिमेंबर, डिपेंडेंट इज डिक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंट. ओसीडी वी हैव लर्न अबाउट ईगो डिस्टॉर्निंग एंड अवॉइडेंट इज अवॉइडिंग द पीपल. नाउ मेंटल रिटार्डेशन. सर माइल्ड इज 50 to 69. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डाउन. सर लेस देन 20 to 34, 35 to 49 and 50 to 69. Mild, moderate, severe and profound. Mild, moderate, severe and profound. ठीक है, and profound sir. ठीक है. Now there is a tele-mental health program scheme which was asked in the recent exam, that is Telemanas, where you can tell your mental problem and they will try to help you out with whatever therapy is needed, sessions are needed, or anything else is needing. They are there to help you out. Telemanas. Nymphomania and satriasis. Excess sexual desire in a female is called as nymphomania. And sir, satriasis is excess sexual desire in a male. Excess sexual desire in a male is called as satriasis. अगर किसी का नाम आशीष हो, आशीष is a male is having more sexual desire, sir. Here is having a within 3 postpartum blues. Duration within 3 months. Sadness, tearfulness, sleep, anhedonia, suicidal thought. Postpartum depression occur within 2 to 3 months. And this is happening, hallucination and delusion along with the symptom of postpartum depression. This completes our psychiatry subjects.